चैप्टर था, दूसरा पार्ट शुरू करवा दिया। अच्छा अच्छा, तो पार्ट 1 में 2 चैप्टर्स नहीं हुए हैं आपके ना। थर्मोडायनामिक्स नाम सुना है आपने? थर्मो, जी ये नहीं हुआ। अच्छा, ये हो चुका? नहीं, नहीं हुआ ना? ये, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला हो गया है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक सीधा, है ना? जी जी You have been done, you are done with 1 2 3 4 and now they are in part 2। सही यस कह रहे हैं? ठीक है। जी। तो आपके पार्ट 1 में से 2 चैप्टर नहीं हुए हैं, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम। आई थॉट पार्ट 1 भी कंप्लीट करा दिया। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। पार्ट 2 में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट सीक्वेंस, बिकॉज पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो कुछ रिलेशन तो है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा सकता है, नॉट अ बैड डिसीजन। ठीक है ना? ओके, सो आई थिंक, और ये 4 चैप्टर्स तो आपके आने वाले हैं हाफ ईयरली में, राइट? डू यू हैव एनी डेट्स कि हाफ ईयरली कब होगा? कुछ बताया आपके स्कूल हाफ ने? ईयरली हम लोग का हो चुका है। अच्छा, तो अब क्या, अब जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा कब होगा? वो सितंबर, शायद सितंबर एंड में। सितंबर एंड में होगा, और उसमें कौन फर्स्ट चैप आप जो हाफ, हाँ बताइए बताइए। चैप्टर अभी नहीं पता है कोई। अच्छा, जो हाफ ईयरली में आया है वो आएगा या नहीं आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। तो 1 नहीं आएगा? 1 2 3 और 4 का हाफ। ओह, तो आपको ये 4 मतलब हटा ही देते हैं इसको फिर तो हम, है ना? लेकिन इतना कम चैप्टर के टर्म में कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, आपका देखा जाएगा बाद में, जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तभी कुछ किया जा सकता है, अभी तो नहीं। अब्दुल हमीद, यू टेल मी व्हाट चैप्टर इज गोइंग ऑन इन योर स्कूल? Sir, chemical bond. अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग। एंड डिड दे गिव यू एनी डेट फॉर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन? October 18th. October 18th. You will हाँ, not have is there any exam before October 18th? no sir. There is no unit test वगैरह भी नहीं होगा? नहीं सर, नहीं सर। ओह, अच्छा, तो October 18th October तक आप 18th सारे को घंटे अ, मतलब प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे हम लोग को, और ये भी एग्जाम भी। एग्जाम पे रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम्म, अक्टूबर 18 का, चलिए ठीक है। यानी कि आपके यहाँ सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में एंड होगा, फिर फेब में आपके एग्जाम होंगे, ऐसे कुछ आती प्लान कर रहे हैं आपके स्कूल में भी, और दिसंबर में हाँ भी एंड मैम। हो सकता है, दिसंबर जनवरी मिड में। ठीक है, फाइन देन, आई वोंट हैव टू। अच्छा, अब कुछ अगर इफ यू गेट एनी न्यू अपडेट यू विल लेट मी नो, ओके अब्दुल हमीद? यस सर। और सर वो हाँ हाँ, एग्जाम के लिए भी हम लोग को फर्स्ट 5 चैप्टर आएंगे। अच्छा वो बता दिया आपको, फर्स्ट 5 हाँ, वो चैप्टर्स। बता दें। ओके फाइन। फर्स्ट 5 सो चैप्टर। 1 2 3 4 एंड देन, अच्छा फाइन, ठीक है, तो ये हाफ टाइम और वहां तक इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ, ये आपको करना होगा, जो पिछले के छूटे हुए हैं वो आपको तो करना पड़ेगा, राइट अब्दुल हमीद? यस सर। है ना? वो आप उसको आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्टार्ट कर दीजिए कंप्लीट करना। ठीक है, जी सर। ओके। व्हाट अबाउट यू खदीजा? We finished thermodynamics, sir, and we क्या? started equilibrium. ओके, सो आई थिंक आमना का एक सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, और खदीजा का भी, क्योंकि द स्कूल इज अहेड। ठीक है, और 11th क्लास में, मतलब 12th क्लास तक बच्चे आते आते ना थोड़ा उनको समझ हो जाती है, और 11th क्लास में ये पहली बार होता है कि ट्यूशंस पीछे हैं और स्कूल आगे चल रहा है, राइट खदीजा? हाँ, है ना? तो वो आपको पता चल रहा होगा क्यों होता है ऐसे, क्योंकि टाइम चाहिए यहाँ के, जो भी कंटेंट को समझने के लिए टाइम चाहिए आपको। स्कूल में वो टाइम नहीं देते, वो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने में, राइट? हाँ। चलिए ठीक है, तो आमना का एक और है खदीजा। आमना का 1 2 3 4 में से कुछ नहीं आ रहा है, सो आई हैव टू वरी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम चैप्टर जो भी अब आगे आने वाला है। खदीजा, आपके यहाँ थर्मो हो चुका है, आई हैव हाँ, टू वरी अबाउट थर्मो एंड equilibrium. इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, डू यू हैव हाफ ईयरली नियर बाय? Yeah. व्हेन डू अभी यू हैव द? लेकिन they didn't confirm it yet, but probably September ending के सब। अच्छा, एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ सितंबर। हाँ। अच्छा, डिड यू हैव द फर्स्ट, आई मीन हाफ ईयरली से पहले हुआ है कोई एग्जाम मेजर? नहीं, नहीं हुआ। नहीं हुआ है, तो यानी कि 1 से लेके 4 तक तो आ रहे हैं, राइट? हाँ, सो 1 2 3 4 5 एंड देन 5 में मतलब थर्मो आ जाएगा आपके पास, और फिर इक्विलिब्रियम। इतना चैप्टर तो आपका आ रहा है, ठीक है, तो हाँ। होपफुली ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हमें टेंशन है, थर्मो और इक्विलिब्रियम के बारे में। देख, if you want ना, what we can do, I have a batch in which अब्दुल हमीद भी वो अटेंड कर रहे हैं। अब्दुल हमीद he is attending thermodynamics, right? थर्मो, है ना? थर्मो यस ही सर। अटेंड कर रहे हैं ना आप अब्दुल हमीद? यस सर। यस If सर। you guys are free on Saturday and Sunday,
This is up to you guys, okay? Saturday and Sunday. The time is the same time, but on Saturday, Sunday, ना 9 p.m. IST. ठीक है? 9 p.m. IST. If you guys want to come, then you will message me, okay? हम अभी आपसे पूछ, खदीजा आप आना चाहेंगी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में? आपको कोई क्लास है? Saturday I can come, but Sunday busy है. संडे बिजी है, फिर कैसे कीजिएगा? Somehow I'll attend. Somehow you will attend. How will you attend? आप ऐसे क्लोन कीजिएगा, एक खदीजा इधर एक खदीजा उधर? नहीं. फिर कैसे कीजिएगा संडे का? Busy as in I don't have tuition. I have something else, some other class, so I'll क्या क्लास है shift आपका? it. I have like I have to go for like Quran classes. तजवीद के लिए या फिर हाँ, हिफ्स के लिए? हिफ्स के लिए. अच्छा, हिफ्स के लिए माशाल्लाह. व्हाट पारा आर यू? कौन से इसमें आप? 26th. ओह माशाल्लाह. फिर मिठाई कैसे भेजिएगा आप इंडिया? खदीजा हाँ. मिठाई कैसे भेजिएगा? कैसे भेजिएगा मिठाई? मतलब ऐसे मतलब बोलने के लिए बच्चे सर हम आपको टिकट मिठाई दोनों भेज देंगे, आप आ जाइए, ये भी नहीं बोलिएगा. ठीक है, चलिए रहेगी. अच्छा चलिए माशाल्लाह, है ना. चलिए अल्लाह ताला आपकी मदद करें इसमें. ठीक है, ओके. सो एक चीज आप ना, मतलब मेरा एक कजन है, आई डोंट नो वेदर आई हैव टोल्ड दिस टू यू गाइस और नॉट. मेरा एक कजन है जिससे हमने एक चीज सीखी, वो भी हाफिज है. हमने एक चीज सीखी और वो अभी स्टार्ट किया है, मतलब क्लासेस, मतलब इसको 9th क्लास में अभी. ठीक है, तो उसके माशाल्लाह मार्क्स तो बिल्कुल टॉप द क्लास रहता है. ठीक है, उसके अंदर एक एटीट्यूड आ गया है कुरान कंप्लीट करने के बाद, हिफ्ज़ करने के बाद, कि वो किसी चीज को छोड़ता नहीं. मतलब ही इज अनअवेयर ऑफ दैट, बट बिकॉज आई टीच हिम आई गेट टू नो. मतलब एक 9th क्लास के बच्चे का एटीट्यूड हमको पता है ना, हम भी 9th क्लास में थे. मतलब नहीं आता था तो छोड़ देते थे, है ना. कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, लेकिन आफ्टर ही हैज कंप्लीट, एक चीज हमको ये नजर आ रहा है उसके इसमें ना, कि कुछ छोड़ना नहीं है. एंड आई थिंक इट इज बिकॉज, मान लीजिए आपको सूर्य नास नहीं याद है, बल्कि मतलब भले ही कितनी छोटी सूर्य इखलास मान लीजिए किसी को याद नहीं है, उसको भी आप हाफिज नहीं कह सकते हैं, राइट. हाफिज तभी होगा जब वो मुकम्मल, लाइक इफ इट इज कंप्लीट. सो आई थिंक ही हैज गॉट इट, इज दिस थिंग हैज गॉटन कि कुछ छोड़ना ही नहीं है. ठीक है, तो ट्राई टू, दिस इज फॉर एवरीवन, ट्राई टू डेवलप दिस. जो पोर्शन में है आपके, लाइक अगर आपको एक सवाल नहीं आ रहा ना किसी चैप्टर का, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है. That chapter is not completed. ठीक है, and this is something that you will hear from the toppers. जो वो बच्चे, when you ask them कैसी तैयारी, they say नहीं यार ये चैप्टर भी नहीं हुआ, ये चैप्टर भी नहीं हुआ. Why they say that we have not, I have not done this one also, because they have left one question or one portion from those chapters. फिर भी उनके दिमाग में ये कि ये हुआ ही नहीं है. तो वो एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ जाए ना, अगर एक भी सवाल आपका छूटा हुआ है, तो आप अपने आप खुद को बोलिए कि ये चैप्टर नहीं हुआ है मेरा. अगर आपसे एक सवाल भी नहीं बन रहा है तो आपको चैप्टर नहीं हुआ. ये आप लेके चलेंगे तब, मतलब मार्क्स आपको, ये एटीट्यूड है बस, छोटी सी चीज है ना. दिस स्मॉल चेंज इन एटीट्यूड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर हैबिट एंड एवरीथिंग. ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं. आपका खदीजा हमने देख लिया. जिसको भी अटेंड करना है थर्मोडायनेमिक्स, सैटरडे संडे ऑलवेज वेलकम. थर्मोडायनेमिक्स भले ही उसमें 2 क्लासेस हो चुके हैं, बट इंशाल्लाह ये अब्दुल हमीद भी एक क्लास लेट आए थे, बट आई होप अब्दुल हमीद को उस दिन समझ में आया. आइए थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन एक एक चीज समझते हुए चलेंगे तब आसान है, वरना बहुत हार्ड चैप्टर है. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं आसान है, अगर आपने एक एक चीज समझ ली, अगर छोड़ दी कुछ चीजों को तो फिर बहुत हार्ड है. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. whom do we, what do we have here now? शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम. am I audible शाइस्ता? Yes, sir. आप बताइए क्या चैप्टर चल रहा है आपके स्कूल में? 4th chapter, sir. States of matter. States of matter. Yeah, sir. It's 4th in my book. Yeah. 4th in your book. 5th होगा वो. 5th is stoichiometry. 5th is what? Stoichiometry. आप ये बताइए आपका बोर्ड कौन सा है पहले तो, फिर what board are you in? State board, I suppose. Yeah. Which कहाँ का है, मतलब कौन सा स्टेट है? Telangana and AP state. So you are going to give the exam from Telangana? Yes, sir. Oh, this is the new information. I did not know about this. Okay, शाइस्ता, तो फिर stoichiometry है आपका, अभी states of matter चल रहा है. Yes, sir. We completed chemical bonding.
What else have you completed, Kilmina? What chapters you have completed? I've completed atomic structure, classification of elements, and chemical bonding. Okay, periodic table and chemical bonding. These are completed. उसके बाद you have stoichiometry. That is completed. No, sir. This is not completed. So they did not do stoichiometry. They went to states of matter. Right? States. Yes, sir. Okay, states of matter. It's fine. After this, you have stoichiometry, na? You said? Yes, sir. Okay, fine. So stoichiometry is actually the first chapter at yeah, I have to see now telling. ठीक है, खदीजा का केस एक क्रिटिकल है थोड़ा, और शाइस्ता का हमको थोड़ा देखना पड़ेगा. अच्छा, I did not know about this शाइस्ता. अच्छा, एक चीज आपको बताते हैं शाइस्ता. States of matter is not there in CBSE anymore. Okay. तो एटलीस्ट जब तक हमारे क्लासेस चलते तो स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा होगा. लेकिन आप एस ब्लॉक, ई ब्लॉक सब कुछ है आपका. Yes, sir. कोड चेंज करा लीजिए, आप बता रहे हैं हम. अगर हो सके तो सीबीएसई स्कूल में चले जाइए, बहुत आसान सिलेबस है वहाँ पे. ना स्टेट्स ऑफ मैटर है, ना ही वहाँ पे एस ब्लॉक है, ना ही पी ब्लॉक है. ठीक है, कोई भी है ना, हाइड्रोजन है वहाँ पे. आई थिंक देयर आर फ्यू मोर चैप्टर्स. मेटलर्जी उनका है कि नहीं पता नहीं. तो 12th में है. ठीक है, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं. तेलंगाना स्टेट ने करा दिया होगा या डिलीट. ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं इस चीज को. ठीक है, फाइन शाइस्ता. Yes, sir. आपका हाफ ईयरली है अभी हाल फिलहाल में कभी? No, sir. We just finished our quarterly exams. So you will be having something in October end or October mid, right? Yeah, I guess. Okay, fine. ठीक है. If you do you have any unit test or something? No, sir. Okay, चलिए ठीक है, no problem. Okay, so I will have to see the case for Amna, Khadija and Shaista. Amna का भी end of September you said, Amna, right? Yes, sir. End of September. Okay. हम देखेंगे लाइक आप लोगों का सिलेबस किस तरह से हो. नहीं, बाय द वे वन अनाउंसमेंट इज दैट यू मस्ट हैव गॉट, अगर नहीं मिला आप लोगों को तो बता दीजिएगा, यू हैव टेस्ट ऑन 1st of September. Okay, and the chapters, there are 2 chapters, some basic concepts and atomic structure. Okay, so these 2 chapters are coming on Friday. ठीक है, ये आपके पेरेंट्स के साथ कम से कम शेयर कर दिया गया होगा द सिलेबस. ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जो होगा दैट विल बी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. दैट मींस द थर्ड चैप्टर, एंड दिस विल बी वीक 2. वीक 2 आपका कब पड़ेगा? वीक 2 विल बी ऑन 8th September, periodic properties, and then week 3 will be, third week of September will be 8 हो गया 15 September में you will be having test on chemical bonding. Is it clear, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. If you have not got the syllabus, just let me know. Okay, आप एक बार मैसेज कर दीजिए. बायोलॉजी का, फिजिक्स का जो कुछ भी ना वो पीडीएफ हम आपको भेज देंगे. ठीक है. In the last class we looked at the formal charge, right, and a math question. Math question हटाइए, formal charge देखते हैं. ठीक है. So we have done with formal charge. Now write limitations of Lewis octet. Limitations of Lewis octet rule. ठीक है. See, number 1. So it cannot see, first of all, it is not applicable for hydrogen atom, not applicable for hydrogen atom. Now why? Because it can hold, hydrogen can hold only, it can accommodate only 2 electrons, right, not 8 electrons. Second is does not explain
stability of electron deficient species. Okay, does not explain the stability of electron deficient species. For example, you will have lithium chloride. In this, lithium is having 2 electrons, right? So how it is stable? Then you will have beryllium fluoride, BeF2. Beryllium here it is having only 4 electrons, not 8 electrons. Similarly, you will see BF3. All of these molecules, they exist in nature. They exist in nature, and according to Lewis, we can have bonding when only and only if the atoms that are combining, they gain 8 electrons in their octet. Okay, in the valence shell, they gain octet. But that is not happening in the case of BF3. In BF3, we have only 3 fluorine, so there will be only 6 electrons, 3 bonds, 6 electrons. Similarly, BCl3, BH3. Okay, so all of these are what? It does not explain the stability of these electron deficient species. Another thing is that it does not explain stability of electron rich species. What are electron rich species? Some molecules such as PF5. So we have phosphorus and we have 5 fluorine attached to it. Now, if I count the number of electron in the phosphorus atom, so phosphorus is making 5 bonds, so obviously it is going to have 10 electron in the valence shell. Similarly, if I have SF6, so 6 fluorine, that means 12 electron in the valence shell, right? Then similarly, you can have IF7, iodine F7. So all of these molecules, they exist. So if they exist, their valence shell should contain only 8 electrons according to Lewis, but this contains 14 electron now. So Lewis rule was not able to explain these molecules, why do they exist and their stability. How are these stable? How are they forming bond? Another one is the last one, fourth one, please write. Does not explain stability of odd electron species. Okay, for example, NO2. So in NO2, if you scan the total valence electron, this will be equal to 5 plus 2 into 6. 6 for oxygen atom. So 5, 6 2 is 12, 12 plus 5 is 17. Obviously, you cannot have pairs of electron and 17, right? Bond pair and lone pair. There are only 2 things in what Lewis dot structure. We have only 2 things. Either it is bond pair or it is lone pair. So pair means 2 electron. You cannot distribute 17 in pairs, right? Because it is always odd electron. So the structure of NO2 is something like this. This nitrogen will have 1 lone pair. This oxygen will have 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will have 1, 2, 3, 4. But the nitrogen here, it is having 1 electron, that is odd electron. So obviously, we cannot explain the formation of this one. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. these are the different limitations of Lewis octet rule. There are only 4, right? So not applicable for hydrogen, then electron deficient, electron rich, and odd electron species. Okay. Now, all of you wrote this. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now, we are going to look at the bonding theory. So please write the topic. Bonding theories. So there are 2 bonding theories that we have to learn. There are 2 bonding theories that we have to learn. One is the valence bond theory, and the other one is the molecular orbital theory. Right, first of all, here we'll be first learning about valence bond theory, and then we have molecular orbital theory. So valence bond theory is VBT, molecular orbital theory is MOT. Okay, small VBT and MOT.
First of all, we will learn about the valence bond theory. Then we will learn about the molecular orbital theory. Please write the heading. Valence bond theory. If you got this, आगे बढ़े, valence bond theory पढ़े, चलिए. Yes, sir. ठीक है. So valence bond theory says that if an atom has an orbital with unpaired electron, if it is having one odd electron and an unpaired electron, and then there is another atom with another unpaired electron, let us suppose it is P, and generally they will be in opposite spins. But I mean, agar nahi bhi hote hain, then after bonding they come into opposite spin. So what will happen? Then the bond is formed between these two. And how is the bond formed? They overlap the orbitals. The overlapping of orbital lead to the formation of bond. इस तरह से. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here what will happen? Overlapping of orbital, and this overlapping of orbital forms bond. Now, please start to understand the bonding completely. Okay. कुछ भी चीज यहाँ पे missing नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए. Hydrogen is hydrogen because it has its nucleus has one proton. Correct? If the nucleus will have two proton, it will become helium. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. सही है ना? Yes, sir. हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कब तक बोलेंगे? जब वहां पे क्या हो रहा है? प्रोटॉन है. That means the identity of an atom is the number of proton. It is the number of proton. So when we say two atoms are combining, so what is happening? The nuclei are coming together. So the nuclei of A atom is here. The nuclei of B atom is here. Now both the nuclei will be positively charged depending on the number of proton. Correct, guys? Still here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Yes. Now, obviously, you should say, sir, how if two atoms are combining and the identity of atoms is the nucleus, nucleus is positive charge, how can they attract each other and how can there be any bond? We'll say, yes, that is the concept of bonding. How bonding takes place, how two positively charged or two positively charged particles are attracted. So they are attracted towards each other indirectly. How? See, if I am having overlapping, that means in between there will be electron cloud, correct? I'm making the electron cloud like this. So electron has a wave nature. I hope all of you guys know this from the atomic structure. So this is electron cloud. Okay, electron are revolving here. Electron are revolving here or just moving here and there. Now please see, this positively charged nucleus will be attracted towards electron, and this positively charged blue nuclei will also be attracted towards the electron. Correct? Yes or no? Please tell me. यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ या ना? Yes, now sir. indirectly what you will see, positive and negative. Positive, the nucleus of A and the nucleus of B, these are attracting each other. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Sorry, sir. Is this clear? Like how are they attracting each other? The Yes, sir. positive and positive charges, they are attracting through the electrons. Is this clear all of you? Yes or no? Rishita, Abdul Hamid, Amna. Sir, can you explain again? Achha, no problem. No problem. See here. Till here you are fine. That now, right now there will be no attraction. Correct? Rishita, you have to say yes or no, no. There will be no attraction. But the attraction can be there if you have electron. What will happen? Okay. I'm just concentrating on the red nucleus. Red nucleus will be attracted towards the electron. Electron की तरफ, मतलब ये देखिए ऐसा नहीं कि इधर attraction हो रहा है, आप ये समझिए ऐसे. ये भी arrow बनाने में आपको confusion है. इस तरफ attract होगा, सही है? हाँ sir. और blue वाला इधर attract होगा, it will be attracted this way. Yes sir. So essentially what is happening? The A nucleus, it is getting attracted towards the B nucleus. ऐसा ही तो हो रहा है, हाँ या ना? हाँ sir. So that is bonding. Got it? Yes sir.
अट्रैक्ट इट्स वेरी बॉन्डिंग ऐसे बहुत आसान है, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड होता है बस. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, कहीं डाउट आ जाए किसी को ना कि भाई एटम्स तो होते हैं क्या, आइडेंटिटी किसकी, न्यूक्लियस. So how nucleus are attracted towards each other? They are both positively charged, so they are attracted towards each other indirectly because उसके बीच में इलेक्ट्रॉन है. If you have electron between two nucleus, both their nuclei will be attracted towards the electron and indirectly they will be attracted towards each other. ठीक है? So this is valence bond theory, and the electron is coming here because of what? Because of overlapping of orbit. What is this? This is overlapping. The most important thing is overlapping of orbital. Is this clear? Yes or no, please? यहाँ तक सबको clear है? हाँ या ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना? We just need to write it now. Please write what valence bond theory is. We have understood now. Okay, I am going to write. You will not be seeing any doubt or any new thing here. Please write covalent bond. Covalent bond is formed by overlapping of two half-filled atomic orbitals. AO is atomic orbitals of their valence shell. Now, if we have greater overlapping, there will be greater attraction between them. So the bond will be formed. Whatever bond is formed, it will be stronger. So please write greater the extent of overlapping. Greater the extent of overlapping between two atomic orbital, stronger bond is formed. Stronger is the bond formed. Got it? Yes or no, please tell me. Yes, Yes, sir. Yes. Next, looking for proper orientation. For proper overlapping. Wait a second. ऐसा लिख लीजिए for proper की जगह effective overlapping. For effective overlapping, there must be proper orientation between the atomic orbitals. What is the meaning? See, if you guys don't know ना, तो हम यहाँ पे जरा बता देते हैं. All the orbitals, if you have not seen. So we have s orbitals. So s subshell will have only one, that is spherical in shape. When you go to p, there will be px, which will be in some shape like this. Then we will have py. All of these are p, है ना? And then you will have pz. So py is in the y-axis, and the pz in the z-axis. Then in dz, you can just remember a few, like you can remember it like this. It is going to have double dumbbell shape. Okay, double dumbbell shape. But I will recommend to you remember these at least shapes. Okay, px, py, and pz, and the s subshell. Okay, guys, clear है सबको आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Meaning क्या है? Effective overlapping, there must be proper orientation. Please see. If you are having y orbital, है ना? And s is coming, so there will be no overlap ना, बीच में आ जाएगा s, right? That is the proper orientation. Another thing is that each of these orbitals, they have phases, different phases. Okay, what is the meaning of phase? Please understand. Electron has wave nature. And due to that wave nature, what is a wave? Wave is something like this, right? So this above here, it is known as the positive phase. This is known as the negative phase. So if I look at s orbital, so some of the s will be having positive phase, some of the s will be having negative phase. If I look at the p orbital, so p orbital, it has a positive phase here, negative phase here. Positive and negative, these are not charges. These are, वो बस ये बता रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन का फेज एम्पलीट्यूड ऊपर है या नीचे, नथिंग एल्स.
कुछ पॉजिटिव अच्छा नहीं है, नेगेटिव खराब भी नहीं है। इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। ऐसे लगता है ना पॉजिटिव मतलब अच्छा, नेगेटिव मतलब खराब, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव इट इज जस्ट देयर। हाँ, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू ऐड पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मिलेंगे तो और पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे तो और नेगेटिव बना लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, वो हम बता देंगे क्या होता है। आफ्टर दिस यू विल राइट, ये आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं, डोंट राइट दिस इफ यू हैव नॉट रिटन, इफ यू हैव रिटन दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। For effective overlapping, there must be proper orientation between the atomic orbital. Now, there are different types of orbital which can take place depending on how is the orientation, what phase is getting overlapped with what phase. Okay, so types of overlapping. Please write types of overlapping. So here we have three types. First of all, we have positive overlapping. Next, we have negative overlapping. Then you have zero overlap. Okay. Number one. Positive overlap. ध्यान दीजिएगा। When overlapping, please understand, of atomic orbital with same sign of sign, है ना? साइन मतलब वो फेज होता है, ठीक है ना? With same sign of sign, same. पॉजिटिव नहीं कहा हमने, नेगेटिव नेगेटिव भी होगा तो इट विल बी पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव भी हुआ तो क्या होगा? इट विल बी पॉजिटिव ओवरलैप। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट। सेम साइन होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए बस। आफ्टर दिस यू राइट दिस रिजल्ट्स इन attractive forces. This results in attractive forces. For example, S subshell and S subshell. Positive, positive, they will overlap with each other. Or yes, that's overlap. Positive and positive, right? So this overlapping here, it will be positive overlap. This will be positive overlap. Similarly, if you have negative, negative, tab bhi kya hoga? Same sign. You have to just see the sign. Same sign. Negative and negative are overlapping. This is an example of positive overlap. Okay, same sign hona chahiye that, because if I have a s orbital which is positive here and I have a p orbital like this, here you will have positive, negative. So what is going to happen here? Positive and negative, they will overlap. इसको हम copy कर लेते हैं, ठीक है ना? आप कुछ नहीं कर पाइएगा, but I can copy here like this. And see, positive positive का overlapping हो रहा है ना? So this is also going to be what? This is also going to be positive overlap, है ना? इतना इस तरह से बिल्कुल बढ़िया overlapping हो रहा है, ठीक है? Now, if I take ठीक है, now negative negative will overlap, तो क्या हो जाएगा? Then also you will be having अरे बात समझ में आ रही सबको, है ना? ये बताएं पहले। यस सर। ठीक है, सारे एग्जांपल्स हम लिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्लास देख लीजिए यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है।
See, negative is overlapping with negative, positive is overlapping with positive in this case also. ठीक है? So इस तरह से भी अगर आपके पास कुछ आ जाए, so this is also positive overlap. इनमें सबको हाँ या ना ये बताएं. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. yes sir. चलिए. After this, आपको नेगेटिव ओवरलैप का डेफिनेशन लिखा रहे हैं, उसके बाद हम फिर सवाल देंगे. ठीक है, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप कुछ एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल देंगे आपको. ठीक है, ये पॉजिटिव मैंने साथ दिया आप लोग को. पॉजिटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाई? पॉजिटिव से ही बॉन्ड बनता है. दिस रिजल्ट इन अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, दिस रिजल्ट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सेकंड लिखिएगा जरा. आई होप यू हैव रिटन टिल हियर. यू विल राइट नेगेटिव ओवरलैपिंग. So what happens here? Overlapping between atomic orbitals of different sign of sign. कैसे साइन होंगे? डिफरेंट है ना. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव, ये ओवरलैपिंग तो होगी यहाँ पे, बट दिस विल बी नॉट अट्रैक्टिव फोर्स है ना. यहाँ पे एक लाइन हम लिखना बोलते हैं. दिस रिजल्ट्स इन रिपल्सिव फोर्सेस. गॉट इट गाइस? सिस्टम प्लीज टेल मी. यहाँ पर आपको ये देखिए, ऐसे रेड दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. आप पॉजिटिव नेगेटिव आपको बोला जाएगा ना, एग्जांपल बताएं पॉजिटिव ओवरलैपिंग नेगेटिव ओवरलैपिंग, तब इस तरह से कर दीजिएगा. ठीक है, दैट्स इट. Sorry, sir. आप एक बार हम पी का भी दिखा देते हैं. In the exam, if they ask you, na, if they are going to say that right or negative overlapping, so agar aap, if you are not showing it like this also, these red things, na, then also it is fine. You just need to show that overlapping between different sign of sign, positive and negative are overlapping. That is enough for showing. But I write it like this to show you that यहाँ पे कोई overlapping नहीं हो रही. Both of these are cancelling each other. Got it? Yes or no? Please आके समझ में आई Yes, बात? sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए. एक सेकंड. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ले लेते हैं, ठीक है. अब now when these are going to overlap, negative overlapping, positive and negative are overlap. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Third is zero overlap. Third is zero overlap. ठीक है, zero overlapping क्या होता है? Sir, can you show the other two diagrams again? हाँ, इससे पहले वाला. नहीं सर, यही. I'm done, sir. Done. Yes, sir. Okay. Then. So in zero overlapping, what happens? Overlapping, it is between atomic orbital with same and different sign of sign. Same and different की वजह एक से opposite लिखते हैं. ठीक है, different से अच्छा word हो जाएगा opposite. Opposite sign of sign simultaneously. ये कैसे होगा सर जी? बताओ. Let us suppose I have s orbital इस तरह से. ठीक है, और आपके पास
ठीक है. So now let us suppose this red one here, sorry, the S subshell here, it is positively phased, है ना? This is positive phase. So you can see positive and positive here. You will have what? Positive overlapping. इधर क्या हो जाएगा? Negative overlapping. So in total, it will be what? Zero overlapping. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. So this is example of zero overlapping. Similar, another example would be what? If you have something like this negatively and you have something like this. ठीक है. So here you will be having positive, negative, negative same हो गया. Negative positive अलग भी हो गया. तो क्या हो जाएगा? Zero overlap. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So zero overlapping also results in repulsive forces. This results in repulsive forces. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Now, write a note. तो हमने सारे एग्जांपल आपको करा दिए, सवाल कराने की जरूरत उतनी है. Please write only positive overlapping results in bond formation. Results in bond formation. ठीक है. कौन बॉन्ड बनाता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है. Now we will look at the different types of bonds which are formed. ठीक है. Different types of bonds which are formed. Please see here, guys. ध्यान से देखिएगा बिल्कुल. ठीक है. In the different types of overlapping, positive और इसमें आपने जब देखा, see here. If I have the nucleus here somewhere, ठीक है. एक ना कंसेप्ट होता है, वो आपको हम पहले बता देते हैं. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का, ठीक है ना, उसको समझ लीजिए जरा. There is a concept of internuclear axis. क्या बोले हम? What did I say? Tell me, guys. Internuclear axis, sir. Internuclear axis. Internuclear axis. ठीक है. क्या होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? इसको हम लोग INA बोलेंगे. ठीक है. You don't need to write this. Please understand it first of all. What is this? Internuclear axis. For example, I have A यहाँ पे और B यहाँ पे. ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के पास आ रहे हैं. ठीक है. So this is the internuclear axis between the atoms of A and B. Got it? Yes or no? Atom A का न्यूक्लियस, एटम B का न्यूक्लियस यहाँ, इन दोनों के बीच में ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. गॉट इट? आसान? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. Yes, Similarly speaking, see here, please see. If I talk in the terms of overlapping, if I have the S subshell here and another S subshell here, and both of them are overlapping, see किस एक्सिस में ओवरलैप कर रहे हैं? Can you see that? So this will be the internuclear axis ना? यही वाला क्या हो जाएगा? This will be the internuclear axis. ऐसे सही है? हाँ या ना? Yes, sir. This will be the internuclear axis. ठीक है. अच्छा. अब दूसरी चीज समझिए. P भी इसी तरह करते हैं, लेकिन आपके पास एक बॉन्ड इस तरह से है P का और दूसरा बॉन्ड इस तरह से है P का. अब यहाँ पे भी देखिए, the internuclear axis is this only. ये है ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अगर दोनों न्यूक्लियस की है, यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे. This and this will be the nuclei, right? Now there are, if you see the positive overlapping, there are two different types of overlapping which are happening. First case, the overlapping is happening with only one lobe. Okay, so this S में you have one lobe, P you have two lobes. If you look at D, there are four lobes. Okay, so these are known as lobes. Lobes of different orbital. Try to understand. Don't try to write here. Please don't try to write. So you will see overlapping happening on internuclear axis with one lobe. One atomic orbital, it is interacting only with its one lobe. And you see there will be whatever is happening on internuclear axis. See here.
this is happening in internuclear axis and one lobe is interacting with the other lobe, है ना? See, only these two lobes are interacting. That means one atomic orbital is one lobe. Here also you see between the internuclear axis, है ना, overlapping is happening on the internuclear axis and one lobe interaction. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इसी के बेसिस पे क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। अब आपने भले ही जो भी पढ़ा हो उससे मतलब है नहीं, बॉन्ड्स तो होते हैं इसी के बेसिस पे। बॉन्ड्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द लोब इंटरैक्शन। इफ there is only one lobe interaction, कितनी lobe interaction? One lobe interaction. Or if you have two lobe interaction, है ना, or if you have 4 lobe interaction, 4 lobe interaction. One lobe interaction, if you go into detail, you will see lobes will be on, lobes are on internuclear axis. Whatever lobes are interacting, they are on internuclear axis. If there is 2 lobe interaction, then lobes are on, lobes are not on, lobes are above and below INA, internuclear axis. If you look at 4 lobe interaction, then also lobes are above and below internuclear axis. देखिए, वन लोब इंटरैक्शन का तो एग्जांपल हम लोगों ने दे दिया। इससे क्या बनता है? इससे मिलता है आपको सिग्मा बॉन्ड। You get sigma bond with one lobe interaction and we write this as sigma इस तरह से। With 2 lobe interaction you get pi bond, which is like this, pi bond. With 4 lobe interaction you will get delta bond, जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? This is delta. Now you may have seen one lobe, 2 lobe, you must not have seen 4 lobe interaction. Please see here guys, one lobe का तो बहुत एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से हो गया। All of these are one lobe interaction. Yes or no? Please tell me. सही है? Yes, हाँ या ना sir. सर? ठीक है? Yes, If I look at the pi bond, that is 2 lobe interaction above and below. So this is my internuclear axis, like this. I have the P here, I have the P here, like this. So this is above and below the internuclear axis. I am having pi bond. ठीक है? हाँ या ना? Got it, guys? Yes or no? Please tell Yes, me. sir. अब ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को समझिएगा बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आप लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर थोड़ी सी हार्ड चीज पढ़ दीजिएगा ना, तो तब जो आसान है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना? इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगाते हैं इसको ऐसे। देखिए गाइस, ठीक है, ध्यान से देखिए ना, ये आपके पास यहाँ पे सेंटर हो गया। आई एम ट्राइंग टू मेक अ डी सर्कल बनाना है भाई। मान लीजिए आपका छत है ना, छत का जहाँ पे पंखा है वहां पे ऐसे इस तरह से डी ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है? दूसरा डी ऑर्बिटल बन रहा है कुछ इस तरह से। जो आपके पास फ्लोर है, फ्लोर में बन रहा है, ठीक है? ये नहीं हुआ। दिस इज इन द फ्लोर, ठीक है? अब ये समझ लीजिए दैट दीज आर इंटरैक्टिंग। देखिए वन लोब यहाँ पे मिला,
these two will be interacting like this, these two will be interacting like this, these two will be interacting like this, and these two will be interacting like this. ठीक है, तो कैन यू सी 4 लोब इंटरेक्शन? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. आप लोग को 4 लोब इंटरेक्शन होता हुआ दिखा है ना? अब इसी में समझिए जरा, ये इस पर्टिकुलर एक्सिस, इसको हटा देते हैं जरा, है ना, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। ये क्या हो रहा है, ये चारों के चारों इस तरह से 4 लोब इंटरेक्शन। आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ पे हो जाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये फ्लोर में जो पंखा था और फ्लोर का बिल्कुल मिड पॉइंट, ये दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो आपके पास राइट लेफ्ट बोल दीजिए या अबव बिलो बोल दीजिए, देखने का तरीका बस अलग अलग है, लेकिन 4 लोब इंटरेक्शन सबको दिख गया, हाँ या ना, ये बताइए। Yes, sir. दैट्स इट। ये आपको दिखाना था 4 लोब इंटरेक्शन, ये डेल्टा बॉन्ड होता है, इसको बना लीजिए आप लोग। लेकिन ये बस ना आप ऐसे ध्यान में रखिएगा ना, मतलब ये हमने इस वजह से बता दिया कि पता नहीं ना, इसमें से कोई एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो आगे जाकर शायद केमिस्ट्री पढ़े, ठीक है, तो उनको आइडिया एक होना चाहिए। आप भूल जाइए, अब आप लोग भूल जाइए इसको, ठीक है। अब्दुल हमीद आमना आके आप सब लोग भूल गए, ऐसे सबकॉन्शियस में आपके आ गया, ठीक है। हाँ बस आपने ना अगल बगल में ऐसे आप नोट्स लेके जाइएगा, हमारा लर्निंग वाला नोट्स लेके जाइएगा, और स्कूल में ऐसे ना ऐसे ये वाला पेज खोल के रख दीजिएगा ऐसे, बिल्कुल पाई सिग्मा डेल्टा, आसपास के बच्चे पागल हो जाएंगे, है ना, एकदम बिल्कुल डरा, एकदम एग्जाम से एक दिन पहले कीजिएगा ये चीज, ठीक है ना। आपका अगले दिन टेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, और आप ये पेज खोल के रख दीजिए, बॉन्ड्स 1 लोब इंटरेक्शन 2 लोब इंटरेक्शन, वो पागल है बच्चे, आया ना, करेंगे ना सब कोई। अब्दुल हमीद आके इल्हाम खदीजा, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग आते हैं बुक की तरफ। बुक में आपको इससे सस्ता लिखना है। अब देखिए हमें थोड़ा सा हार्ड से आपको समझ में आ गया ना, अब बाकी तो इतनी आसानी से समझ में आ जाए, क्या बताएं, ध्यान से सुनिए जरा। तुरंत कर लेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा और फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, हाँ ठीक है, ध्यान से बस देखते जाइए, सब कुछ समझ में आता जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ, जहां आपको समझ में ना आए वहीं पे हमको रोक दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अभी तो पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड, लेकिन वो नॉलेज के लिए। अभी एग्जाम में क्या लिखेंगे, प्लीज राइट हियर, एग्जाम में लिखना है आपको इजी इजी, एंड टू एंड, एंड टू एंड, और हेड ऑन, हेड ऑन, और axial overlapping, और axial overlapping, और axial overlapping of atomic orbitals on internuclear axis, यानी कि INA, ठीक है ना, INA नहीं, स्कूल में आप लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिखिएगा, एग्जाम में आया तो बात समझ में आ गई आपको। ये सारे वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आपने नहीं ना, एंड ऑन एंड, हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग, काफी। एटॉमिक ऑर्बिटल INA कुछ नहीं लिखा तब भी चलेगा सबको, अच्छा मैं सबको हाँ यार, इसमें नो प्लीज टेल मी, Yes, sir. Yes, sir. हेड ऑन ओवरलैप। नाउ सिग्मा बॉन्ड इज मेड बाय 3 डिफरेंट टाइप्स, वो सारी चीजें हमने देख ली है। सिग्मा बॉन्ड अब सिर्फ लिखने के लिए बचा है, सिग्मा बॉन्ड बस रिपीटेशन और कुछ। सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है, देखिए जरा, ला 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 ला। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है 3 किस्म के, कैसे कैसे, एक को बोलते हैं एस एस की ओवरलैपिंग से, ये तो पढ़ चुका है सर हमने हम, हाँ फिर भी लिख लो दोबारा। फिर बन सकता है कैसे, एस और पी के ओवरलैप से, एस पी ओवरलैप, एंड इट कैन बी मेड बाय पीपी ओवरलैप। एस एस ओवरलैप कैसे हो जाएगा, control C, control V, so S and S are overlapping like this, bad, ठीक है। और if you want to draw the internuclear axis, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, इसको थोड़ा बस नीचे कर देते हैं, नीचे थोड़ा सा होगा ही नहीं है, ठीक है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको बस हम किसी अलग कलर से बना देते हैं, ठीक है। अच्छा एस पी ओवरलैपिंग में क्या होगा, प्लीज सी हियर गाइस,
ठीक है, दिस इज sp overlap. Can all of you see that? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes. Then you will have pp. अच्छा, PP के लिए तो इसको लेना पड़ेगा ना, 1p here, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और ये आ गया आपके पास दूसरा p. ये आ गया आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. All of you got this? Yes or no, please tell me. Yes, तो sir. नया था नहीं वैसे, है ना, कुछ तो नया था. ठीक है. अच्छा, all of these will be overlapping, will be always in same phase because we are making now bond. When we talk, as soon as we said sigma bond, the phases will be same here, phases will be same here, and phases will be same in the pp also. Okay, चलिए next is देखिए second one, formation of pi bond. अब यहाँ पे मुझे लिखना है lateral और sideways. Of sideways overlapping of atomic orbitals along ion. Now, pi bond can be formed by 3 different ways. देखिए एक चीज तो आपको पता चल गई होगी, s में कितने लोब होते हैं? How many lobes are there in s orbital? How many lobes in the s orbital? Yes, Akib? 1. 1. और पाई के लिए कितने लोब का इंटरेक्शन चाहिए? Pi के लिए 2. 2. s तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना, राइट? Yes, sir. ठीक है ना, s कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग बस. ठीक है, इसको हम जरा ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. पाई बॉन्ड के लिए भी 3 पार्ट हमने कर दिया. ठीक है, एक पाई बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं p pi p pi. दैट मींस द पाई ऑर्बिटल इज मेड बाय pp. कैसे बनता है वो तो आप लोगों ने देखा है अभी. ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है. एंड दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये तो आप लोगों ने देखा था p pi p pi. अब सुनिए जरा, एक होता है p pi d pi. तो p तो आपके पास इसी तरह से आ जाएगा. हाउ द d इज कमिंग, प्लीज सी हियर. एक हमको बस पत्ता बनाने दीजिए, बढ़िया वाला, एक पत्ते से ही कमाल कर देंगे. अच्छा, ये अभी इधर जरूरत पड़ने वाला है तो इसको हम साइड में कर देते हैं. ये देखिए, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप. अब सुन लीजिए जरा, यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेंशन दी ये आल्सो साइंस आल्सो. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. ये होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. Now you can see easily that this overlapping is also between positive and positive. That is why it will be a formation of bond. तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्मेशन बॉन्ड. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक आपके पास ये है, दूसरा डी पाई होगा इस तरह से.
साइन दे दीजिएगा यहाँ पे भी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पॉजिटिव तो ये वाला भी पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव तो ये वाला भी नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप हियर। This is d pi d pi। सबको बात समझ में आ गई? हाँ या ना बताएं। Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए जरा इसको। Once you're done, you will let me know. Done, sir. All of it done, yes, Nuki, tell me. Yes, सबने sir. कर लिया? यस सर। Yes, sir. अरे एक बात बताइए, कुछ आपसे हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? कंसिडर x एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस बताइए? Internuclear axis. विच एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर? x एक्सिस, ठीक है। यस सर। आपसे अगर पूछा जाए कि अगर आपके पास 1s एंड 1s है, तो ये सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, क्या जवाब होना चाहिए आपका? Sigma. मैं सर Sigma. क्यों सिग्मा? सिग्मा क्यों सिग्मा? वन क्योंकि s कभी भी 1 बना सकते हैं। आप लोग बोलिएगा बिकॉज हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। वन लोब इंटरेक्शन मत बोलिएगा, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो, लेकिन सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं। व्हेन आई वेंट टू बैचेस आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, तब हमको पता चला ये कंसेप्ट, ठीक है। तो बुक में आपके लोब इंटरेक्शन के बारे में नहीं दिया हो, तो लोब इंटरेक्शन को आप अपने तक सीमित रखें, ठीक है ना, वो समझने के लिए। बट आई होप यू कैन सी दैट हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड, है ना। वो हम जाएंगे एनसीईआरटी को बोलेंगे, है ना, कि इसको लिखो लोब इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। सुनिए जरा 1s के बारे में क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों? क्योंकि एक तो एक ही लोब होता है, तो कैसा ओवरलैपिंग होगा हमेशा है, बिकॉज बुक की लैंग्वेज में मार्क्स लाना ना भाई, पहले तो हेड ऑन, समझने का तो समझ लिया, ओवरलैप याद रहेगा, हाँ या ना बताएं। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब सुनिए सेकंड में अगर आपके पास हम बोले 1s एंड 2p, तो कैसा बनेगा बताइए, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई तो 2p और 2p आपको बोला 2px कैसा होगा, सिग्मा Sir, या पाई? 5 1 हो सकता है. एस में कितने लोब होते हैं? अरे समझने के लिए तो कम से कम बोलो, एस में कितने लोब? 1, तो क्या ये कभी पाई बनाएगा? नो 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 नहीं. नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज समझिए, ये पी एक्स ऐसे होगा, एक्स होगा ऐसे, और एस बी, ये मान लीजिए अगर एक्स एक्सिस है तो एस बी कौन सा एक्सिस में होगा? एस बी, बिकॉज इट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो हेड ऑन दिख रहा है आपको, हाँ या ना? Yes, sir. सिग्मा sir. बॉन्ड बिकॉज हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है ना। अब सुनिए दूसरा वाला केस, थर्ड, इफ यू हैव 2px एंड 2px, तब क्या बनेगा? Pi bond. नहीं ना, पाई कैसे बनेगा? देखिए 2px रखते हैं x में, क्या रखते हैं x में, 2px क्या रखते हैं x में, कैसा बना? अरे बोलो भाई, आज नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से once again, सिग्मा बनेगा, सिग्मा तो बनेगा, क्यों बन रहा है सिग्मा? देखिए कुछ लोगों ने असल में बोल दिया था कि पाई बन सकता है, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, तो 2px कहाँ पे होगा? ऐसे होगा ना 2px तो, Yes, sir.
Yes, 2px sir. ऐसे होगा क्या? ऐसे तो नहीं होगा 2px, दूसरा वाला 2px, दूसरा वाला 2px भी ऐसे होगा. This will be also like this, Good. correct? हाँ, ऐसे था. दिक्कत. Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. सीखा ना 2px 2px. सही है. If you have 2p and 2py, तो आपके साथ x axis. This is your x axis. बताइए x. को ऐसे बना सकते हैं. And this be 2py. 2py. बताइए क्या हाल है? py. Okay, I'm really sorry, guys. I got disconnected. Yeah. What I was asking, see, this axis is what? Am I audible, guys? Yes or no? Please tell me. जल्दी बताएं. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So this is x-axis. Okay. So can I write the 2py like this? क्या ये 2py हो सकता है? No, sir. No, sir. क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? Because Because 2py का लोब कहाँ पे रहेगा? y axis पे Y रहेगा ना? axis पे x रहेगा. axis में तो नहीं रह सकता. Yes, हाँ, sir. y axis पे रहेगा. तो y axis will be perpendicular to x axis. y axis क्या होगा? Perpendicular. अरे क्या हो रहा है? ये एक हो गया. बाकी हम चीज थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. ठीक है. और दूसरा वाला भी इसी अरे यार, माय बैड. आराम से सालिम, आराम से आराम से आराम से. दूसरा वाला इधर होगा. और ये लोग मूव लेकिन कौन से एक्सिस में करेंगे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस. सो दे विल मूव ऑन एक्स एक्सिस. इस तरह से बताइए कौन सा बॉन्ड बना? Pi. Bye. विच बॉन्ड?